Hello, am I audible to you? Hello. Am I audible to you? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार साथियों, पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्लास 12 फिजिक्स की क्लास चैप्टर फर्स्ट की हो गई, उसके बाद हमने केमिस्ट्री की चैप्टर फर्स्ट की क्लास की। अब ये जो तीसरी क्लास है वो क्लास 12 मैथ्स की चैप्टर फर्स्ट की है। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बढ़िया एंजॉय करिए सेशन के लिए। एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए सफलताओं का एक बहुत बड़ा भंडार लेके आए। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के सारे सदस्य स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ हम फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। In this module, you will learn about different types of relations and their properties. Let's take a quick look at relations that you learned in your previous class. A relation R from a non-empty set A to another non-empty set B is a subset of the Cartesian product of A and B. The subset R is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B. To better understand the concept, let us see this example. Here, we have to find a relation R from A to B such that for any A in A and B in B, A is a factor of B and also A is less than B. That is, in the given sets A and B, we have to find the set of ordered pairs AB such that A is a factor of B and A is less than B. Let 2 and 6 be any arbitrary elements of set A and B respectively. Now, 2 is a factor of 6 and also 2 is less than 6. So, 2, 6 is one such ordered pair that satisfies relation R. Likewise, other such ordered pairs can be obtained. Thus, the set of all the ordered pairs so formed is the relation R, which is as shown. The set of all the first elements of the ordered pairs in a relation R from a set A to a set B is called the domain of the relation R. And the set of all the second elements of the ordered pairs is called the range of R. If the ordered pair AB belongs to set R, then we say
that A is related to B, which is denoted by ARB. You also learned that if the number of elements in set A is P and the number of elements in set B is Q, then the total number of elements in the Cartesian product of A and B is PQ, and the total number of possible relations from set A to set B is 2 raised to the power of PQ. Let us now learn about the different types of relations. Consider set A with elements 1, 2, 3 and 4. The Cartesian product of A with itself consists of 16 ordered pairs as shown here. Let us define a relation R on A, defined as the set of all ordered pairs x, y, such that x plus y is equal to 15. Recall that any relation R in A is a subset of A cross A. In this case, no ordered pair satisfies the condition that the sum of their elements is 15. Hence, relation R has no ordered pairs in it. These types of relations are known as empty relations. Mathematically, a relation R in a set A is called an empty relation. If no element of A is related to any element of A, that is, R is an empty set and is a subset of A cross A. Proceeding further, let us define a relation R in A as the set of ordered pair xy such that x plus y is less than or equal to 8. Choose any arbitrary ordered pair from A cross A. Observe that the sum of its elements is less than or equal to 8. Here, all the ordered pairs satisfy the condition that the sum of their elements is less than or equal to 8. Hence, we get a relation R that has all the ordered pairs present in A cross A. This type of a relation is known as the universal relation or total relation. Mathematically, a relation R in a set A is called a universal relation or total relation if every element of A is related to every element of A, that is, R is equal to A cross A. An empty relation and the universal relation are sometimes called trivial relations. There are 4 different types of relations. Let's first see when a relation is said to be reflexive. Let T be the set of all triangles in a plane. Define the relation R in T by the set of ordered pairs T1, T2, such that T1 is similar to itself and set R is related to itself. Such types of relations are called reflexive relations. Mathematically, a relation R in T is said to be reflexive if every element of set R is related to itself, that is, the ordered pair XX belongs to R for every X in T. Next, let's see when a relation is said to be symmetric. Again, consider the same relation R in T defined by T1, T2 such that T1 is similar to T2. Let T1, T2 be an ordered pair in set R. Then it will imply that T1 is similar to T2. So we can also say T2 is also similar to T1. This implies the ordered pair T2, T1 is also in R. Such relations are called symmetric relations. Mathematically, a relation R in a set T is said to be symmetric if ordered pair XY belongs to R, implies that ordered pair YX is also in R for all X and Y in T. Let us take one contradictory example. Relation R in the set 1, 2, 3 is not symmetric. This is because the ordered pair 1, 3 belongs to R
but 3-1 doesn't. Note that it is wrong to say that it is sometimes symmetric or asymmetric as far as 1 and 2 are concerned, since being symmetric is a property of the whole relation. Let us now study about transitive relations. A relation R in T is said to be transitive if x, y and y, z belong to R. Implies that ordered pair x, z also belongs to ZR. Let's check the transitivity of the relation R in T, which is defined by the set of ordered pairs T1, T2, such that T1 is similar to T2. Consider the ordered pairs T1, T2 and T2, T3 in set R. By definition, T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. Now, T2 is similar to both T1 and T3. So this implies that T1 is similar to T3. This in turn implies that the ordered pair T1, T3 belong to set R. Hence, ordered pairs T1, T2 and T2, T3 belong to set R implies that T1, T3 is also in R. This shows that the relation R in T is transitive. Now, let's come back to the relation R in ZT. We observed that the relation R in T is reflexive, symmetric, and transitive. Such a relation R in T is called an equivalence relation. Mathematically, a relation is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric, and transitive. In this module, you will learn about different types of functions. Let us see this diagram. फलनों के प्रकार। इस अध्याय में आप विभिन्न प्रकार के फलनों के बारे में जानेंगे। आइए इस आरेख को देखें। यह फलन f1 a से b का आरेखीय निरूपण दिखाता है, जो रोस्टर ग्रुप में दिए गए फलन का निरूपण करता है। हमें 4 क्रमित युग्मों वाला एक समुच्चय मिलता है। ध्यान दें कि समुच्चय a के विभिन्न अवयव समुच्चय b के विभिन्न अवयवों के साथ संगत हैं। इसका अर्थ है कि f1 के अंतर्गत समुच्चय a के विभिन्न अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग है। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी 2 क्रमित युग्मों के दूसरे निर्देशांक समान नहीं होते हैं। अब इस आरेख को देखें। इस स्थिति में भी f2 के अंतर्गत समुच्चय a के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग है, या किसी भी 2 क्रमित युग्मों के दूसरे निर्देशांक समान नहीं हैं। इस प्रकार के फलन को इकैकी फलन के रूप में जाना जाता है। आगे इसे गणितीय रूप से परिभाषित करें। एक फलन f a से b इकैकी फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत a के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं। अर्थात प्रत्येक x a में है के लिए f(x1) बराबर f(x2) का तात्पर्य है कि x1 बराबर x2। यदि f(x1) f(x2) के बराबर नहीं है तो x1 x2 के बराबर नहीं है। इकैकी फलन को इकैक फलन के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा यदि कोई फलन इकैकी फलन नहीं है तो इसे बहुएक फलन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ दिखाया गया फलन f इकैकी फलन नहीं है, क्योंकि इसमें समुच्चय a के 2 अलग अलग अवयव 3 और 4 हैं, जिनका प्रतिबिंब f के अंतर्गत ऋण 3 है। अतः फलन f बहुएक फलन है। आइए फलन f और g का निरीक्षण करें। इकैकी के लिए फलन की जांच करने के लिए
हम फलन f के प्रांत में किसी भी दो अलग अलग मानों पर विचार करते हैं और जांच करते हैं कि उनके संगत प्रक्षेपण अलग अलग हैं। पहले मामले में अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब होता है, इसलिए दिया गया फलन एक ही फलन है। हालांकि दूसरे मामले में 9 और 23 का प्रतिबिंब ऋण 4 है। इसका अर्थ ये है कि G9 बराबर G23 बराबर ऋण 4, अतः फलन G एक ही फलन नहीं है। आगे बढ़ते हुए आइए अब दिखाते हैं कि fx बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन f R से R एक ही फलन है। मान लीजिए x1 और x2 फलन f के प्रांत R से कोई भी यादृच्छिक अवयव है, जैसे कि fx1 बराबर fx2। अब fx बराबर 2x, इसलिए fx1 बराबर fx2 देता है 2x1 बराबर 2x2, जिसका अर्थ x1 बराबर x2। अतः f के प्रांत में किसी भी दो यादृच्छिक अवयव fx1 बराबर fx2 यानी x1 बराबर x2, अतः f R से R एक ही फलन है। यह आकृति फलन fx बराबर 2x के आरेख को दर्शाती है। किसी फलन का आरेख दिए जाने पर आप क्षैतिज रेखा परीक्षण नामक परीक्षण की सहायता से जान सकते हैं कि यह एक ही फलन है या नहीं। फलन fx बराबर 2x की एकाकी की जांच करने के लिए हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, जैसी कि ये आरेख को काटे। ये रेखा आरेख को केवल एक स्थान पर काटती है। इस प्रकार के फलन को एकाकी फलन के रूप में जाना जाता है। इस आरेख में भी क्षैतिज रेखा आरेख को केवल एक स्थान पर काट रही है, इसलिए फलन एकाकी है। ऐसे मामलों में जहां रेखा फलन के आरेख को एक से अधिक स्थानों पर काटती है, फलन एकाकी नहीं होते। ये आरेख एक फलन का आलेख दिखाता है जो एकाकी नहीं है। आइए अब आच्छादक फलन के बारे में चर्चा करें। आइए f a से b फलन पर विचार करें, जो यहाँ दिखाया गया है। हमारी पिछली चर्चा से हम फलन का सहप्रांत और प्रांत पा सकते हैं। फलन f का सहप्रांत 5, 6 और 7 अवयवों वाला समुच्चय b है और फलन का परिसर भी वही समुच्चय है। इसका अर्थ है कि फलन का परिसर फलन के सहप्रांत के बराबर है। ऐसे फलन को आच्छादक फलन के रूप में जाना जाता है। गणितीय रूप से समुच्चय a से समुच्चय b तक फलन f को आच्छादक कहा जाता है यदि और केवल यदि b के प्रत्येक अवयव y के लिए a में एक अवयव x होता है, जैसा कि fx बराबर y। इसका अर्थ है कि सहप्रांत में प्रत्येक y के लिए प्रांत में कम से कम एक x मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि f का परिसर f के सहप्रांत के बराबर है। अतः f आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f a बराबर b हो। आच्छादक फलन का दूसरा नाम आच्छादी फलन है। वे फलन जिसमें दो अवयव एक ही अवयव पर प्रतिचित्रित किए जाते हैं, वे भी आच्छादक फलन होते हैं, बशर्ते कि f के सहप्रांत में प्रत्येक अवयव की एक पूर्व प्रतिबिंब मौजूद हो। उदाहरण के लिए फलन f a से b आच्छादक है। हालांकि G एक आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि G के सहप्रांत में अवयव के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। In this module, you will learn about different types of functions. Let us see this diagram. It shows the graphical representation of the function f1 from a to b. On representing the given function in roster form, we obtain a set with 4 ordered pairs. Observe that different elements of set A have correspondence with different elements of set B. That means the images of different elements of set A under F1 are different. We can also say that no two ordered pairs have
have the same second coordinates. Now, take a look at this diagram. In this case also, the images of the distinct elements of set A under F2 are distinct. Or, no two ordered pairs have the same second coordinates. Such types of functions are known as 1-1 functions. Let us define it mathematically. A function f from a to b is said to be 1-1 if the images of the distinct elements of a under f are distinct. That is, for every x1 and x2 in the domain of f, f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2. Or, if f of x1 is not equal to f of x2, then x1 is not equal to x2. A 1-1 function is also known as an injective function, or simply an injection. Further, if a function is not 1-1, then it is known as many-one. For example, function f shown here is not 1-1, has two distinct elements. 3 and 4 of set A have the same image, minus 3 under f. Hence, function f is many-one. Let us observe functions f and g. To check the functions for injectivity, we consider any two different values in the domain of function f and check that their corresponding outputs are different. In the first case, different elements have different images. Therefore, the given function is 1-1. However, in the second case, image of 9 and 23 is minus 4. It means that g of 9 and g of 23 is equal to minus 4. Hence, the function g is not 1-1. Moving forward, let's now show that the function f from R to R defined by f of x is equal to x2 is a 1-1 function. Let x1 and x2 be any two arbitrary elements from domain R of function f such that f of x1 is equal to f of x2. Now, f of x is equal to 2x. So, f of x1 is equal to f of x2 implies that 2x1 is equal to 2x2. This gives x1 is equal to x2. Hence, for any two arbitrary elements x1 and x2 in the domain of f, f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2. Therefore, function f from R to R is 1-1. This diagram shows the graph of the function. F of x
is equal to 2x. Given the graph of a function, you can check whether it is 1-to-1 or not with the help of a test known as the horizontal line test. To check the injectivity of the function f of x is equal to 2x, we draw a horizontal line such that it cuts the graph. This line cuts the graph only at one place. Such types of functions are known as 1-1 functions. In this graph also, the horizontal line is intersecting the graph at only one place. Hence, the function is 1-1. In cases where the line cuts the graph of a function at more than one place, the functions are not 1-1. This diagram shows the graph of a function that is not 1-1. Let us now discuss about the onto function. Let's begin by considering the function f from a to b, which is shown here. From our previous discussion, we can find the codomain and domain of the function. The codomain of function f is set P with the elements 5, 6 and 7. And the range of the function is also the same set. It implies that the range of the function is equal to the codomain of the function. Such functions are known as onto functions. Mathematically, a function f from a set A to a set B is said to be onto if and only if for every element y of V, there is an element x in A such that f of x is equal to y. This implies for every y in the codomain, there exists at least one x in the domain. So, we can say that the range of f is equal to the codomain of f. Hence, f is onto if and only if f of a is equal to b. The other name for an onto function is surjective function or simply surjection. The functions in which two elements are mapped to the same element are also onto, provided there exists a pre-image of every element in the codomain of f. For example, function f from a to b is onto. However, g is not an onto function since the element 4 in the codomain of g does not have any pre-image in the domain. एकेकी आच्छादी फलन। इस अध्याय में आप एकेकी आच्छादी फलन के बारे में जानेंगे। आपने सीखा कि फलन f a से b को एकेकी या एकैक कहा जाता है यदि a का प्रत्येक अवयव b के अद्वितीय अवयव पर प्रतिचित्रित किया जाता है, अर्थात a के कोई भी दो अवयव b के एक ही अवयव पर प्रतिचित्रित नहीं किए जाते हैं। यहाँ फलन f इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि f एकेकी फलन है।
आपने ये भी सीखा कि फलन f a से b को आच्छादक या आच्छादी फलन कहा जाता है यदि b के प्रत्येक अवयव की a में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब हो। यह फलन f इस प्रतिबंध को भी संतुष्ट करता है और इसलिए ये एक आच्छादक फलन है। इस प्रकार फलन f a से b एकेकी और आच्छादक फलन दोनों है। इस तरह के फलन को एकेकी आच्छादी फलन के रूप में भी जाना जाता है। गणितीय शब्दों में फलन f a से b एकेकी आच्छादी है यदि यह एकेकी और आच्छादक दोनों है। ए बी और सी अवयवों के साथ एक परिमित समुच्चय x पर विचार करें। आइए फलन f x से x को इस तरह परिभाषित करें कि ये एकेकी प्रतिचित्रित हो। तो प्रांत x के प्रत्येक अवयव पर सह प्रांत x में अपना अनूठा मिलान अवयव होता है, अर्थात f के प्रांत से दो अवयव सह प्रांत x के अद्वितीय सदस्य को इंगित नहीं कर सकता है। इसलिए फलन f के परिसर में तीन अवयव a, b और c हैं। ये दर्शाता है कि फलन f का परिसर और सह प्रांत दोनों बराबर हैं। याद रखें कि यदि फलन का सह प्रांत और परिसर बराबर है तो फलन आच्छादक है। इसलिए f x से x तक परिभाषित एकेकी प्रतिचित्रण भी एक आच्छादक प्रतिचित्रण है। अधिक व्यापक रूप से एक परिमित समुच्चय x के लिए एक एकेकी फलन f x से x आवश्यक रूप से आच्छादक होता है। साथ ही एक आच्छादित फलन f x से x प्रत्येक परिमित समुच्चय x के लिए आवश्यक रूप से एकेकी होता है। आइए इसे सिद्ध करें। उस परिमित समुच्चय x पर विचार करें और मान लें कि f x से x एक आच्छादित मानचित्रण है। इसका अर्थ है कि f का परिसर f के सह प्रांत के बराबर है। हमें ये दिखाना है कि f एकेकी है। आइए मान लें कि f एकेकी नहीं है। इसका मतलब है कि x के प्रांत से दो अवयव f के सह प्रांत में समान अवयवों पर प्रतिचित्रित किए गए हैं। मान लीजिए b और c को f के अंतर्गत a पर प्रतिचित्रित किया गया है। अब हमारे पास f के प्रांत में एक और अवयव a बचा है जिसे f के सह प्रांत में शेष दो अवयवों से किसी एक पर प्रतिचित्रित किया जा सकता है। मान लें कि AB को B पर प्रतिचित्रित किया गया है। यह दर्शाता है कि फलन का परिसर f के सह प्रांत के बराबर नहीं है। यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि f का परिसर और सह प्रांत बराबर हैं। इसलिए एक परिसीमित समुच्चय से खुद तक परिभाषित एक आच्छादक फलन हमेशा एकेकी होता है। फलनों का संयोजन। इस अध्याय में आप फलनों के संयोजन के बारे में जानेंगे। मान लीजिए आप एक किराने की दुकान पर जाते हैं और दुकानदार आपको 2000 रुपए से अधिक की किराने का सामान खरीदने पर 20% की छूट देता है और आप दुकान से 5000 का किराने का सामान खरीदते हैं। क्या आप इस खरीद पर मिलने वाली छूट की गणना कर सकते हैं? एक सरल और सीधा तरीका ये है कि पहले उस राशि की गणना करें जिस पर छूट लागू है। यह आपको 5000 रुपए से 2000 रुपए घटाने पर मिलेगा, जिससे 3000 रुपए मिलते हैं। इसके बाद इस राशि पर 20% की छूट दी जाती है।
छूट 600 रुपए है। आइए अब छूट की गणना करने के लिए एक सूत्र निकालते हैं। यदि x रुपए की खरीदारी 2000 रुपए से अधिक की जाती है, पहले चरण में हमें छूट के लिए लागू राशि ज्ञात करनी होगी। मान लीजिए जी आर से आर को gx बराबर x घटा 2000 द्वारा परिभाषित किया गया है। और फिर दूसरे चरण में हमें छूट ज्ञात करनी है। आइए हम एफ आर से आर को एफ एक्स बराबर एक्स के 20% द्वारा परिभाषित करते हैं। ये फलन 2000 रुपए से अधिक की राशि पर ग्राहक को मिलने वाली छूट का पता लगाने में मदद करेगा। फलन एफ और जी को मिलाकर 2000 रुपए से अधिक की खरीद पर छूट की गणना की जा सकती है। इससे फलनों के संयोजन की परिभाषा मिलती है। मान लीजिए एफ ए से बी तथा जी बी से सी दो फलन हैं। तब एफ और जी का संयोजन जी ओ एफ द्वारा निरूपित होता है तथा फलन GOF A से C GOF X को GFX जहां X A में है द्वारा परिभाषित होता है। उपरोक्त स्थिति में खरीद 5000 रुपए की है, इसलिए X को 5000 रुपए मानते हुए x बराबर 5000 पर f और g का संयोजन बराबर fg 5000। अब gx बराबर x घटा 2000, इसलिए g 5000 बराबर 3000। अब fx को x का 20%, इसलिए f 3000 बराबर 3000 का 20% जो 600 रुपए के बराबर है। यह छूट है। आइए अब दो फलनों का संयोजन बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करें। यदि f a से b और g b से c, तो f और g का संयोजन a से c तक परिभाषित फलन है। फलन GOF तभी संभव है जब फलन f का परिसर फलन g का प्रांत हो। जब GOF संभव है तो FOG संभव हो भी सकता है और नहीं भी। यदि GOF और FOG दोनों संभव हैं तो वे बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। इस प्रकार दो फलन F और G की अलग अलग क्रम में संरचना परिणाम को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में क्या दो फलन की संरचना क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करती है? आइए देखें। R से R तक परिभाषित फलन f और g इस प्रकार हैं कि fx बराबर 2x और gx बराबर 3x वर्ग। आइए पहले फलन GOF और फिर FOG की संरचना ज्ञात करें। GOFX बराबर GFX, fx का मान प्रतिस्थापित करने पर जो 2x के बराबर है, ये g 2x देता है। अब gx बराबर 3x वर्ग, इसका तात्पर्य है कि g 2x का बराबर 3 गुणा 2x वर्ग, इसलिए GOFX का मान 12x वर्ग के बराबर है। अब आइए FOG की संरचना का ज्ञात करें। FOGX बराबर FGX का GX का मान प्रतिस्थापित करने पर जो कि 3x वर्ग के बराबर है, ये F 3x वर्ग देता है। अब fx बराबर 2x, इसका तात्पर्य है कि f 3x वर्ग 2 3x वर्ग के बराबर है, इसलिए FOGX का मान बराबर
6x वर्ग है। ध्यान दें कि GOFX FOGX के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो फलन GOF और FOG असमान हैं। इसलिए हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि फलन की संरचना क्रम विनिमय गुण को संतुष्ट नहीं करती है। In this module, you will learn about bijective functions. You have learned that a function f from a to b is said to be 1, or injective if every element of a is mapped to a unique element of b. That is, no two elements of a are mapped to the same element of b. Here, function f satisfies this condition. So we can say f is 1, 1. You have also learned that a function from a to b is said to be an onto or a surjective function if every element of b has at least one pre-image in a. Here, function f satisfies this condition also, and hence it is an onto function. Thus, function f from a to b is both 1, 1 and onto. Such a function is also known as bijective function or a bijection. In mathematical terms, a function f from a to b is a bijection if it is both 1, 1 and onto. Consider a finite set x with the elements a, b and c. Let us define a function f from x to x such that it is a 1, 1 mapping. Then, every element of domain X has its own unique matching element in codomain X. That is, two elements from the domain of F cannot point to a unique member of codomain X. So, the range of function f has three elements a, b and c. This shows the range and the codomain of the function f are equal. Recall that if the codomain and the range of a function are equal, then the function is onto. Hence, the 1, 1 mapping defined from x to x is also an onto mapping. More generally, for a finite set x, a 1, 1 function f from x to x is necessarily onto. Also, an onto function f from x to x is necessarily 1, 1. For every finite set x, let us prove it. Consider the same finite set x and let f be an onto mapping from x to x. This implies the range of f is equal to the codomain of f. We have to show that f is 1, 1. Let's begin by supposing f is not 1 to 1. That means two elements from the domain of x are mapped to the same elements in the codomain of f. Suppose b and c are mapped to a under f. Now, we are left with one more element a in the domain of f that can be mapped to any one of the remaining two elements in the codomain of f. Let a be mapped to b. This shows that the range of the function is not equal to the codomain of f. This is a contradiction to the fact that the range and the codomain of f are equal. Hence, an onto function defined from a finite set to itself is always 1, 1. In this module, you will learn about the composition of functions. Suppose you go to a grocery shop
and the shopkeeper offers you a 20% discount on the purchase of groceries exceeding 2000 rupees, and you purchase grocery worth 5000 rupees from the shop. Can you calculate the discount that you will get on this purchase? A simple and straightforward approach is to first calculate the amount on which the discount is applicable. This you will get on subtracting 2000 rupees from 5000 rupees, which gives 3000 rupees. Next 20% discount is given on this amount. The discount is 600 rupees. Let us now derive a formula to calculate the discount if a purchase of X rupees is made over 2000 rupees. In the first step, we have to find the amount applicable for the discount. This we get on subtracting 2000 from X. Let G be a function from R to R defined by G of X is equal to X minus 2000. And then, in the second step, we have to find the discount. Let us define a function f from R to R by f of x is equal to 20% of x. This function will help to find the discount that a customer gets on the amount exceeding 2000 rupees. By combining functions f and g, the discount on a purchase of over 2000 rupees can be calculated. This leads to the definition of composition of functions. If f is a function defined from a to b and g is a function defined from b to c, then the composition of f and g is a function defined from a to c, denoted by g circle f, and is equal to g of f of x for all x belonging to a. In the above case, the purchase is of 5000 rupees. So, taking x as 5000 rupees, the composition of f and g at x is equal to 5000 is equal to f of g of 5000. Now, g of x is equal to x minus 2000. Therefore, g of 5000 is equal to 3000. Now, f of x is equal to 20% of x. Therefore, f of 3000 is equal to 20% of 3000, which is equal to 600 rupees. This is the discount. Let us now study some important points while forming a composition of two functions. If f is a function defined from a to b and g is a function defined from b to c, then the composition of f and g is the function defined from a to c. The function g circle f is possible only if the range of the function f is the domain of function g. When g circle f is possible, f circle g may or may not be possible. If both g circle f and f circle g are possible, then they may or may not be equal. Does the composition of two functions f and g in different order affect the result? In other words, does the composition of two functions satisfy commutative law? Let's see. Define functions f and g from R to R such that f of x is equal to 2x and g of x is equal to 3x squared. Let's find the composition of functions f and g first, and then g and f. G circle f of x is equal to g of f of x. Substituting the value of f of x, which is equal to 2x, this gives g of 2x. Now, g of x is equal to 3x squared. This implies that g of 2x is equal to 3 multiplied by 2x whole square. Hence, the value of g circle f of x is equal to 12x squared. Now, let us find the composition of g and f. F circle g of x is equal to f of g of x.
Substituting the value of g of x, which is equal to 3x square, this gives f of 3x square. Now, f of x is equal to 2x. This implies f of 3x square is equal to 2 multiplied by 3x square. Hence, the value of f circle g of x is equal to 6x square. Observe that g circle f of x is not equal to f circle g of x. Hence, we can say that two functions g circle f and f circle g are unequal. Hence, we can say in general that the composition of functions does not satisfy the commutative property. In this module, we will be proving some important theorems on the composition of functions. If f is a function from a to b and g is a function from b to c, such that both are 1, 1, then the composition of f and g is also 1, 1. Let's recall when a function is said to be 1, 1. A function f defined from a to b is said to be 1, 1 if the images of distinct elements of a under f are distinct. With the help of this result, let us begin the proof. We are given that functions f and g are 1, 1. This implies that for any arbitrary elements x1 and x2 belonging to set A, if we have fx1 is equal to fx2, then x1 is equal to x2. Also, gx1 is equal to gx2 implies that x1 is equal to x2. To prove that G circle F is 1, 1, we will show that if the composition of F and G at points x1 and x2 are equal, then x1 is equal to x2. Let us consider that the composition of F and G at points x1 and x2 are equal. By the definition of the composition of functions, g of f of x1 is equal to g of f of x2. From equation 2, this implies f of x1 is equal to f of x2. And from equation 1, this further implies that x1 is equal to x2. Hence, the composition of functions f and g from a to c is 1, 1. Let's now move on to the next theorem. If a function f from a to b and a function g from b to c are onto, then the composition of f and g is also onto. Let us consider an arbitrary element z belonging to set C. Since g is onto, there exists a pre-image of y of z under function g such that g of y is equal to z. Let us label this as equation 1. Also, we are given that f is onto, and hence, for y belonging to zb,
there exists an element x belonging to set A such that f of x is equal to y. Denote this by equation 2. Therefore, G circle f of x is equal to G of f of x, which is equal to G of y from equation 2, and G of y is equal to z from equation 1. Thus, corresponding to any arbitrary element z belonging to set C, there exists an element x belonging to set A such that G circle f of x is equal to z. Hence, the composition of f and G is onto. It is important to note that in general, if the composition of f and G is 1, 1, then f is 1, 1. Similarly, if the composition of f and G is onto, then G is onto. The composition of functions can be considered for n number of functions, but in this class, we are discussing only for 3 functions. If f is a function defined from x to y, g is a function defined from y to z, and h is a function defined from z to x, then the composition of functions satisfies the associative property. Consider any arbitrary element x of zx. Let's begin with the left-hand side, which is the composition of the function g circle f and x. This is equal to h of g circle f of x. This is further equal to h of g of f of x. Now, let us evaluate the right-hand side, which is the composition of the functions f and h circle g. This is equal to HOG of f of x, which is further equal to h of g of f of x. Observe that the right-hand side and the left-hand side yield the same result. Hence, the composition of functions satisfies the associative law. तो आज आपने देखे सारे कॉन्सेप्ट क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट के सारे कॉन्सेप्ट आपने आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझे। कल इनके न्यूमेरिकल्स, कल इनके क्वेश्चंस होंगे और हम इस क्लास को कल फिर आगे बढ़ाएंगे। सेम केमिस्ट्री, पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर मैथ्स, ये तीनों हो गए। हो सकेगा तो कल से हम बायोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये पहुंच सके। थैंक यू सो मच। फिर से वहीं कहूँगा कि सेफ्टी ऑलवेज बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड एट योर होम। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और काफ़ी दिनों से मैंने वो लाइन नहीं कही है, स्टूडेंट कह रहे थे कि आप सर अपनी पंक्तियाँ दोहरा दीजिएगा, तो मैं फिर से कह देता हूँ। जिनके जीवन में युद्ध नहीं वो तो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। पर तू तो मेरा मांझी है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। यदि आपको सूरज सा चमकना है तो आपको जलना होगा, तपना होगा। अगर नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा।
एक छोटा सा बच्चा गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, और वो आगे बढ़ जाता है। इसी क्रम में वो आगे बढ़ जाता है। तो जो लगातार प्रयास करता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो डर जाता है वो पीछे हट जाता है, कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसी कामना के साथ कि आप सूरज की तरह चमको, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, हम इस क्लास से आपसे विदा लेते हैं। हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम।